हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त मोर यही यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ p.b.sir को स्वागत मु हूँ आपंकर से प्रवीण सर बा विशोई सर। अच्छा स्टूडेंट्स प्रीवियसली आम जो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ुले से चैप्टर रे आज आम आउ कि मिसेलानियस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवा जो क्वेश्चन गुड़िक आपणकर प्रीवियस ईयर रे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे आसी अछि। ताहले चलंतु देखिबा आज रो ए वीडियो रे हमरो केउ प्रकार क्वेश्चन सब अछि। Question number 10. An amount of money is to be divided among P, Q and R in the ratio 4:9:16. If R gets 4 times more than P, what is Q's share in it? अच्छा स्टूडेंट्स ये गोटे ट्रिकी क्वेश्चन केमिति देखंतु आपनकर देइछि कोन ना P Q और R यांको भितर रेशियो अछि केते ना 4:9:16 4:9:16। अच्छा स्टूडेंट्स आमको जदि कौन सी वैल्यू बा अमाउंट बाहर करियार अछि ताहले आइदर हमर इंडिविजुअल कहार गोटे वैल्यू बा अमाउंट दबार थिला किंबा टोटल वैल्यू बा अमाउंट दबार थिला कि जेहेतु से इंडिविजुअल बा टोटल कौन सी वैल्यू देई नाही नो एठी हमें वैल्यू ही बाहर करि परिबा नाही वैल्यू बा अमाउंट बाहर करि परिबा नाही नो एठी होची हमर ऑप्शन 4 टी होची आंसर सेटा होची कोन ना डाटा इनएडिक्वेट। अच्छा स्टूडेंट्स एठी गोटे कांसेप्ट देइछि कोन ना इफ r गेट्स 4 टाइम्स मोर देन p। अच्छा एठी आपण देखंतु p हमर 4 अछि r अछि हमर 16 ने ये ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स होउचे तनो हमको आउ किछि एक्स्ट्रा डाटा दबार थिला जो डाटाटा से देई नाही ताले एठी हमर ऑप्शन 4 ही हबो। ताले चलंतु जिबा आज ए वीडियो रो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11। If 25% of a number is subtracted from a second number, the second number reduces to its 5/6. What is the ratio between the first number and the second number? अच्छा स्टूडेंट्स मोटे लिखी दोची फर्स्ट नंबर हमरो जदि x हैला ताले सेकेंड नंबर को हमें नौचंती y। क्वेश्चन अनुसार से कौन देइछि ना 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर। अच्छा सेकंड नंबर में कौन नैचंती y रु से केते कहउछि ना 25% ऑफ x रो हमें 25% सब्ट्रैक्ट करिबा 25% माने 25/100 सब्ट्रैक्ट करिबा ताहले से हे जिवो केतिकी ना द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6 माने सेकंड नंबर हमर हे जिवो कोन ना 5/6 ओरिजिनल नंबर अपेक्षा ये 5/6 है जिवो ताहले याकू हमें सॉल्व करले दिस इंप्लाइज y माइनस ये 25/400 है तो ये ही जो हमर केते की ना x/4 इज इक्वल टू 5/6y। अच्छा याकू जदि हमें सॉल्व करिबा ताहले दिस इंप्लाइज y माइनस 5/6y इज इक्वल टू x/4। सो दिस इंप्लाइज ये सब्ट्रैक्ट कर दिले हेजिबो केते की ना y/6 दैट इज इक्वल टू x/4। अच्छा स्टूडेंट से पचारछि रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर ताले दिस इंप्लाइज x/y is equal to 4/6 2 रे कैंसिल कले 2 2 4
2 3 6 2/3 बा 2:3 है तेणु एठी आमर ऑप्शन 1 टी होची राइट आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स ताले चलंतु जिबा आज रो वीडियो रो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। क्वेश्चन टी कोन क्वेश्चन नंबर 12 rupees 600 has been divided among A, B and C in such a way that rupees 40 more than 2/5 of A's share, rupees 20 more than 2/7 of B's share and rupees 10 more than 9/17 of C's share are all equal A's share। अच्छा आम या लिखिद एमती सपोज 2/5 of A 40 मोर देछि तेणु प्लस 40 गली दैट इज इक्वल टू 2/7 B केते मोर देछि 20 मोर देछि तेणु प्लस 20 कली इज इक्वल टू 9/17 C केते मोर देछि 10 मोर देछि ताले प्लस 10। दिस इम्प्लाइज से कही कौन ना ऑल आर इक्वल सपोज समस्त को मु दैट इज इक्वल टू के बोली नहीं गली यदि समस्ते समान ले दिस इम्प्लाइज आमर एमिति लिखि परिबी 2/5 A plus 40 is equal to K। this implies A is equal to K minus 40 ये हिजबो कति की ना 5/2 आर पटु गले रिवर्स हिजबो लिखि दउची मु ये हिजबो 5/2 सेमिति आमर नेक्स्ट इक्वेशन कौन देछि ना 2/7 B plus 20 is equal to K। So this implies B is equal to say जो 7/2 to K minus 20। ताले अगेन आम सी रो भी लिखिदेबा सेमती सो दैट इज इक्वल टू ए ऊपर मु लिखि दउची सो एठी से कौन देछि ना 9/17 of C plus 10 is equal to K। So this implies C is equal to 17/9 into K minus 10। अच्छा आम इंडिविजुअली ए बी सी रो वैल्यू पाई गले ताहले याकू आम कौन लिखिबा ना हमर से देछि कौन ना हमर रुपीज 600 डिवाइडेड करा हबो ए बी आउ सी मध्य रे त माने ए प्लस बी प्लस सी is equal to 600। So this implies a जगह मु लिखि देली केते की ना 5/2 into K minus 40 plus देखो तो ए पर तार बी बी पाई मु लिखिबी केते ना बी पाई लिखिबी 7/2
इंटू के माइनस 20 प्लस बी रो लिखि सारे एबे आम सी रो लिखा ताले सी रो हूँ के ना 17/9 इंटू के माइनस 10 सो दैट इज इक्वल टू आमर से देइछि केते ना 600 बोली से देइछि सो दिस इम्प्लाइज अच्छा ठीक अच्छे आम बर्तमान 2 to 9 कारण आमर डिनोमिनेटर बा हर हूँ के ना 2 2 9 अच्छी तेणु तांकर आम एलसीएम नवा तेल 2 2 9 एलसीएम हूँ 18 आम लिखिदे 18 है ताले 18 हरण 2 आमर 9 है 9 5 45 ये मुझे लिखिदे 45 इंटू के माइनस 40 प्लस ये आम लिखिदे 63 कारण 18 हरण 2 है 9 पाइबा 9 इंटू 7 कले 9 7 63 हम इंटू के माइनस 20 प्लस 18 हरण 9 कले 2 पाइबा 17 दुणे 34 ताले 34 इंटू के माइनस 10 सो दैट इज इक्वल टू 600 ताले फर्दर या आम सॉल्व करिबा so this implies so this implies 45k minus 1800 plus 63k minus 1260 plus 34k minus 340 so that is equal to 600 into 18 कारण 18 टा आर पट को पड़े से मल्टीप्लिकेशन हो जिवो ताहले दिस इंप्लाइज याको हमें सॉल्व करिया वर्तमान so this implies आमर आड करियर अछि केते ना 45k 63k 34k ताले आड कर दिले ये हो जिवो केते की 5 3 8 4 12 2 रे करी 1 3 1 4 6 4 10 10 4 14 142k that is equal to आमर एपट को पलि आसिले सब गुड़ाक आड हो ना 1800 हूँ आमर 108 108 रे दीटा शून्य आम लिखा प्लस 1800 प्लस 1260 प्लस 340 so this implies आमर बर्तमान को आड करदे देखा के 0 0 0 0 लिखि दौची 142k इजिकल टू एठी हमर 0 हैला पुणी ये अछि 4 ये 6 6 4 10 0 0 0 रखी करी हमें ए 1 कैरी कले ले ये हैला 3 1 4 4 2 6 8 6 14 14 8 22 2 लिखिकी हाथ रे 2 कैरी कले तापर नेक्स्ट 2 1 के
3 1 4 अच्छा आमर ये हो गला 14,200 सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू आम पाई के डिविजन कले 100 पाई से पचार व्हाट इज एज शेयर अच्छा आम जानते ए रो शेयर कौन ना ए रो शेयर हूँ 5/2 इंटू k -40 ताहले आमे ताकू सॉल्व कले पाई के रो वैल्यू में 100 पाई तेणु सेटा हो सो दैट इज इक्वल टू केते 100 रु 40 गले 60 है 5/2 इंटू 60 ताले ये कटी गले हम 30 तेणु 150 तमें एठी आपणकर ऑप्शन 3 टी हम राइट आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स आपण मानक जदि वीडियोटी भल लगे ताले प्लीज एको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।